चलिए गुड इवनिंग एवरीवन। आसंता काली इंग्लिश एग्जाम जेहेतु अच्छे आमे इंग्राजी विषय के लेकरी किछिटा आलोचना करमा जेनटा कि आमर एग्जाम लगी हेल्पफुल हवा। समस्ते जानिछन जे ई वर्षर कोर्स माने जेन आमर सिलेबस पैटर्नटा अच्छे एग्जामिनेशन पैटर्नटा अच्छे 50% MCQ थिला जेना कि आम फास्ट एग्जाम ML ओडिया एपियर करूँ समस्ते जानिछू एंड 50% काण थिला सब्जेक्टिव थिला है कि नहीं से किंतु इंग्लिश रो पैटर्न टिके अलगा अच्छे समस्ते जानिछन हैं। इंग्लिश रे आम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मात्र केतरा पाउछू 30टा पाउछू से भितर 20टा काण है 20टा आपनकर थ्योरी है कि नहीं से प्रोज पोएट्री रो आउछे आ 10 मार्क केंद्र आउछे ग्रामर रो आउछे है कि नहीं से तो रेस्ट जेन 70 मार्क आम एग्जाम दौछू काଣା दौछू लॉन्ग क्वेश्चंस दौछू जेना कि प्रोज पोएट्री रो रहला देन एसे रिपोर्ट राइटिंग नोटिस राइटिंग इटा माने अच्छे तो जनरली जिते बड़े आम एप्लिकेशन राइटिंग जेन अच्छे जनरली जिते बड़े आम रिपोर्ट लिखुछूँ कि नोटिस लिखमा कि एप्लिकेशन लिखमा कि आम जेन एसे लिखमा मुझे आज केतेटा सिलेक्टिव टॉपिक रो ना कहमी जेनटा कि प्रोबेबल कही पारमा 100% आम नहीं कही पार ई एग्जाम माने ई टॉपिक ही आमर एग्जाम रे आसवा बोलिकी जस्ट अच्छे पूर्णचंद्र जानवा के तो आम केतेटा प्रोबेबल एप्लिकेशन राइटिंग लेटर आउ किछि प्रोज पोएट्री रो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस माने मुझे मार्क करमी जदि प्रैक्टिस करमा मते लागुजे निहाती एग्जाम रे सेतिर भितर किछि ना किछि आसवा। तो पहला मुई एप्लिकेशन सॉरी मुझे पहला एसे केतरा इम्पोर्टेंट एसे कहूजे समस्ते नोट करनामा यदि निहाती हेल्पफुल हवा आमर एग्जाम लगी। हाँ प्रोबेबल एसे समस्ते जानिछन जेते बेले भी जेन ईयर रे भी एग्जाम होउची से ईयर रो पार्टिकुलर सही ईयर रो कोनोसी ना कोनोसी गुटे इम्पोर्टेंट इंसिडेंट इम्पोर्टेंट मूवमेंट बा इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट डिसीजन के लेकर ही किसी ना किसी एसे राइटिंग मस्ट आसी आम जदि विगत वर्षर प्रश्न को जदि देखमा बोले आम निहाती पामा जेनटा कि रिसेंट इश्यूज भितर कोविड-19 केसेस है कि नहीं से तो कोविड-19 के लेकर कौन ना कौन गोटे एसे आसी पारे फॉर एग्जांपल कोविड-19 माने क्लासरूम सिचुएशन इन कोविड-19 किंबा ऑनलाइन क्लासेस इन कोविड-19 सिचुएशन बुझेगा कि नहीं रिमेडिस ऑफ माने रिमेडिसिन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इन द पीरियड ऑफ कोविड-19 माने बुझेगा कि नहीं जे कोविड-19 समय रे क्लासरूम सिचुएशनटा काना अच्छे कोविड-19 समय रे ऑनलाइन क्लासेस काना करा जाई पारबा काटी देबे जेन क्लास रे कोविड-19 समय रे क्लासेस काना करा जाई पारबा कोविड-19 समय रे केंता करी शिक्षा क्षेत्र तार प्रभाव पड़ुजे एवं तार रिमेडीज काना ही पारबा माने तार प्रतिकार काना ही पारबा काना आमे स्टेप्स नेले कोविड-19 समय रे भी पिला माने प्रॉपर वे रे क्लासेस पाई पारबे ई प्रकार केतरा जिनस के लेकर भी एप्लिकेशंस ए सॉरी एसे राइटिंग आसी पारबा। 2 नंबर है एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड रिमेडीज सब बेले गोटे जिनस ध्यान देमा एसेर टॉपिक जहाँ भी अच्छे एसेर टॉपिक जहाँ भी अच्छे एसेर टॉपिक रो मीनिंग के पहला बुझबार पड़वा इन जेनता कि अच्छे एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड रिमेडीज एनवायरमेंटल पोल्यूशन बेले काना एनवायरमेंट काना है एनवायरमेंट गोटे
टर्म हो गला गोटे वार्ड रो मीनिंग अलग अच्छे पॉल्यूशन रो मीनिंग अलग अच्छे रिमेडीज रो मीनिंग अलग अच्छे माने परिवेश प्रदूषण काना एवं तार प्रतिकार काना जेनता कि ई एसे जदि पढ़वा मे बी जेन माने एजुकेशन स्टूडेंट्स माने अजन समगले बहुत इजीएस्ट हो पारबा कहले जे बोले एनवायरमेंटल एजुकेशन गोटे चैप्टर थिला आमे समस्ते पढ़ीचु एकने से बुझीला करी हेबा मु तार स्टेप्स माने भी टिके बतई देमी पहला मु किछि क्वेश्चंस माने बा किछि सिलेक्टिव कहि दउ छे देन इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशन और राइट टू एजुकेशन इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशन बोलिकी भी +2 लेवल रे बा हायर सेकेंडरी लेवल रे गुटे एसे राइटिंग रोचे इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशन जेनटा कि आम राइट टू एजुकेशन हिसाब रे आमे नहीं पारमा सेटा कि शिक्षार गुरुत्व काना आमे जेनता कि जानिछु आगरो जेन हमर बेसिक नीड्स थिला केतरा बेसिक नीड्स थिला तीनटा फूड शेल्टर क्लॉथ इटा तो थिला किंतु एबे हमर बेसिक नीड्स केतरा चारटा हो गला न काना काना फूड शेल्टर क्लॉथ संगे एजुकेशन एजुकेशन भी निहाती जरूरी है विदाउट एजुकेशन वी कैन नॉट लिव ए काना हैप्पी लाइफ और पीसफुल लाइफ और हार्मोनियस लाइफ जहाँ भी आम कही पार बिना एजुकेशन रे बिना शिक्षा रे आम केते बेले मनीष भी हो नहीं पारूँ क्वेश्चन कि नहीं किए कही एजुकेशन इज द सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू किए कही आमर भारतीय संस्कृति इंडियन कल्चर अकॉर्डिंग टू इंडियन कल्चर एजुकेशन इज द सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ नेक्स्ट है योर फेवराइट सब्जेक्ट पर्सनालिटी भी हो पारे योर फेवराइट सब्जेक्ट पर्सनालिटी गेम ये सब जिनस आसीपे सब्जेक्ट हो पारे पर्सनालिटी हो पारे किंबा काना कहली खेल के नहीं भी क्वेश्चन हो पारे माने कौन ना कौन गोटे आमर फेवराइट जिनस के नहीं भी एसे राइटिंग आसूचे देन वंडर ऑफ साइंस और इंटरनेट काना इटा गोटे इंपोर्टेंट जिनसटे वंडर ऑफ साइंस और इंटरनेट वर्तमान समय विज्ञान रो वंडर बोले आम काना कहमा विज्ञान बा इंटरनेट जुग लगी वर्तमान समय रे काना इफेक्टिव रोचे माने काना बेटर डेवलपमेंट आईसी काना तार काना कहि परमा केन प्रकार चेंजेस है हमर सोसाइटी रे हमर कंट्री रे हला वर्ल्ड वाइड काना चेंजेस है काना न्यू पॉजिटिविटी डेवलप होइछे ई जिनस माने आम इन आमर टॉपिक रे रहबा बुझियाला तार परे नोटिस राइटिंग ऊपर हम किछटा कहूजे जेनटा कि रिपोर्ट राइटिंग कहूचे रिपोर्ट राइटिंग बोले तो काना समस्ते बुझीजन बोधे रिपोर्ट राइटिंग काना बुझछ पिला माने कौन से गोटे टॉपिक दिया जाइथिबा सेटा के रिपोर्ट करवार जे रिपोर्ट राइटिंग नहीं के मु गोटे टॉपिक टे कहूँ यू हैव विजिटेड द स्पॉट ऑफ एन एक्सीडेंट एज ए रिपोर्टर राइट ए रिपोर्ट ऑन द एक्सीडेंट फॉर पब्लिकेशन इन ए न्यूज़पेपर इन मुझे बुझे दौचे जस्ट तार केतरा बीट है तुम्हें काना है गोटे रिपोर्टर है केन के जाइछ गोटे एक्सीडेंट प्लेस के जाइछ इंसिडेंटा काना एक्सीडेंट रिपोर्ट काना करबार अच्छे एक्सीडेंट विषय रे तुम्हें जिते पहुँची जा काना एक्सीडेंट हो सारी माने तुम्हें पहुँची जाओ पास्ट टेंस रे बा इंसिडेंट सरीगला परे तो तुम्हें गोटे रिपोर्टर है यू आर ए रिपोर्टर यू विजिटेड ए स्पॉट
हर एक्सीडेंट हैपेंड बा गोटे एक्सीडेंट ऑलरेडी हो सारी से जगह जाकि तुम काना करबा से एक्सीडेंट के नहीं तुमको गोटे रिपोर्ट लिखवार अच्छे जनरली इ प्रकार गोटे रिपोर्ट राइटिंग आसी केन्ता कर लिखमा आम से जगह केन्ता के लिखमा जिते बड़े आम रिपोर्ट लिखुचु फास्ट ऑफ ऑल आम जो गोटे न्यूज पेपर दौचु काना देसु पहला आम काना लिखसु जिते रिपोर्ट लिखुचु आम काना लिखुचु पहला शाश्वत टू द एडिटर केन्ता लिखमा फॉर्मेट काना टू द एडिटर फॉर एग्जांपल इन गोटे आम मेंशन कला ABC न्यूज पेपर कौन सी भी माने इना गोटे फॉर एग्जांपल वे रे बुझेला कि नहीं फॉर्मेटा इंग्लिश रे एप्लिकेशन राइटिंग रे फॉर्मेटा सबुठानु बड़ जिनस है तुम्हें यदि प्रॉपर फॉर्मेट रे लिखिछ बेले निहाती तुम मार्क किसी पाइब तापर काना लिखमा सब्जेक्ट कि काना कि रिगार्डिंग काना लिखमा पहला जिनस है सब्जेक्ट किन जगह लिखसु जिते बड़े आम एप्लिकेशन लिखसु एप्लिकेशन और रिपोर्ट राइटिंग भितर डिफरेन्सेस काना इन गोटे जिनस देख जे बहुत पिला काना करसन रिपोर्ट राइटिंग रे ई भूल करसन आम एप्लिकेशन लिखुचु जनरली एप्लिकेशन लिखला जा ठान के लिखुचु तार एड्रेस देला सब्जेक्ट देला किंतु इन काना रहबा सब्जेक्ट नहीं रहे काना रहबा केन जगार से घटनाटा घटी फॉर एग्जांपल केन होइजे सपोज बलांगीर आम लिखला धरी केबे घटना घटी जेन डेट रे घटना घटी आम से डेट आम देला टाइम देवाटा जरूरी है कि नहीं से टाइम देवाटा जरूरी है कि नहीं से टाइम दिया जाए कि नहीं रिपोर्ट राइटिंग रे टाइमिंग दिया जाए कि नहीं दिया जाए केन टाइम दिया जाए आम जेन रिपोर्ट करूँ से इनसीडेंट रो टाइम दिया जाए कि आम जेन टाइम रे लिखुँ से टाइम दिया जाए इनसीडेंट रो टाइम दिया जाए आम जेन इनसीडेंटा होता फॉर एग्जांपल सकाळ 10टार इनसीडेंटा हो माने ई जगार मीनिंगटा काना टू द एडिटर जेन आम जार न्यूज पेपर के दौचु जेन जगार दौचु जेन डेट रे दौचु जेन समय रे दौचु नहीं से इटा आम जेन समय रे दौचु आम काना इनसीडेंट टाइम इन आमको डिस्क्राइब करवार अच्छे क्या नहीं से आम इवनिंग रे सपोज से इनफॉर्म कला माने न्यूज पब्लिश हबार पूर्वर तार परे काना करमा एटा जेहेतु स्पेस ना नम एटा के लिभे दौचे तार परे काना करमा एड्रेस करदेला प्लेस डेट आउ काना टाइम दे देला तापरे काना करमा टाइटल दमा टाइटल काना रोड एक्सीडेंट टाइटल के अंडरलाइन करदमा बुझे लगनी तार परे पिले फॉर एग्जांपल इटा हो पेज है आम जेन थी लिखुचु इटा हो पेज है इटा गोटे भी इम्पोर्टाट जिनसटे स्टार्टिंगटा इनु हवा कि स्पेस देकर स्टार्ट हवा सबु बेले स्टार्टिंगटा काना एसी पहला गैप देकर बा किछि स्पेस देकर एसी तो इनु स्टार्ट हवा फर्दर लाइनिंगटा काना हवा फर्दर लाइनिंगटा आम फ्रॉम द मार्जिन जेनु मार्जिन थी आम से जगार लिखिपारमा जहाँ तुम डेस्क्राइब करवार जे डेस्क्राइब कल से इंसिडेंट विषय रे जे ई जिनस है बोलिकी लास्ट रे लेफ्ट माने लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर रे लिखमा कि राइट हैंड साइड कॉर्नर रे लिखमा केन साइड रे आगरू केन साइड रे लिखुतला एबे केन साइड रे लिखमा काना लिखमा इटा लेफ्ट है कि राइट है हैं आगरू आम इंदा लिखुतला कि नहीं हैं किंतु ई जगहटा भूल है इन लिखमा कना रिपोर्टेड बाय जे रिपोर्ट कले तांकर ना इन बस इन ई जेन भितरे जेन आम मैटर लिखमा जेन भी आम रिपोर्ट लिखुचु तार केतेटा इम्पोर्टाट जिनस अच्छी इंसिडेंट प्लेस इंसिडेंट टाइम इंसिडेंट बिटवीन इंसिडेंट हैपेंड बाय
एतकी जिनस मिनिमम माने जेन भी रिपोर्टा लिखुचु यहाँ जेन एक्सीडेंट के लेकर है कि आर भी कौन जिनस के लेकर आम लिखला जे केन जगार है केते बेले है कार कार भितर है कार द्वारा है एवं सबुठानु बड़ जिनस से लोकालिटी बहुत जगह आम क्या कर एतकी लेकर छाड़ी देसु बट आउ गोटे जिनस कण से लोकालिटी से जेन प्रेजेन्स थिले जेन माने से जगार थिले सेमांकर रेस्पॉन्स काना थिला सेमांकर व्यूज काना थिला से माने काना कहूले एवं इंसिडेंट पर काना हेइछि एतकी जिनस रिपोर्ट राइटिंग रे निहाती देमा अनेक समय काना करसु नहीं टुडे आई केम टू नो दैट इन द प्लेस ऑफ डेस्क ए बाइसाइकिल हिट बाय ए बस और ट्रक लिखिदेला इन दैट एक्सीडेंट समवन इंजर्ड एंड समवन डेथ इटा आम लिखि दौचु बट नहीं आम सब से जिनस के मेंशन करमा जिते रिपोर्ट राइटिंग लिखुचु से जेन टाइम देमा से जेन प्लेस देमा से जेन इंसिडेंट रीजन भी जाना देमा इफ पॉसिबल सेटा के आम काଣା करमा आमर पाखे तो कलर करवाली टाइम नहीं था बोल्ड करवाली आम अंडरलाइन करदमा सिंपल अंडरलाइन करदमा जार द्वारा काଣା है एग्जामिनर लगी सेटा बेसी हेल्पफुल है क्या लगी जे तुम्हें जेन टॉपिकटा लिखल सेटा काଣା है एवं से भितर काଣା इंपोर्टेंट जिनसटा तुम्हें देछ ठीक से आ गए रिपोर्ट राइटिंग मुझे कही दौचे राइट ए रिपोर्ट टू द ब्लड डोनेशन कैंप यू हैव ऑर्गेनाइज एज द सेक्रेटरी ऑफ रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर कॉलेज बुझेला राइट ए रिपोर्ट ऑन द ब्लड डोनेशन कैंप यू हैव ऑर्गेनाइज एज द सेक्रेटरी ऑफ रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर कॉलेज निजर कॉलेज रो सेक्रेटरी भावे तुम्हें ब्लड डोनेशन कैंप जेन ऑर्गेनाइज करिछ से विषय के लेकर तुम्हें गोटे रिपोर्ट राइटिंग कर हैला जस्ट हिंट्स लिखि दियो जानी जीवो जदि अच्छे तुम पाखे से जिनस तुम्हें देखी पारब परवर्ती समय रे मुझे खाली कही दौचे आ गोटे रिपोर्ट राइटिंग कही दौचे सिलेक्टिवली यू आर द सेक्रेटरी ऑफ कल्चरल एसोसिएशन ऑफ योर कॉलेज यू आर द सेक्रेटरी ऑफ cultural association of your college report the annual report to be presented at the annual function of the college report prepare the annual report to be presented at the annual function of the college annual function रे college रे report पढ़ाई आसे कि नहीं गोटे पर्टिकुलर ईयर रे काना करा जाइछे काना ने गोटे रिपोर्ट करसु कि नहीं तो तुम्हें जेहेतु गोटे कल्चरल सेक्रेटरी है तुमर एनुअल फंक्शन रो रिपोर्टटा तुम्हें प्रिपेयर करबो नेक्स्ट हला as the secretary of the athletic club of your college prepare a report on the activities of your club as the secretary of the athletic club as the secretary of the athletic club of your college prepare a report on the athletic of your club तुमर athletic club रो activity काना थिला सेही पर्टिकुलर ईयर रे से विषय रे गुटे रिपोर्ट लेख आ गए सबुठानु इम्पोर्टेंट दुटा मुझे कही दौचे राइट ए रिपोर्ट अबाउट द सेल्फ डिफेन्स कैंप राइट ए रिपोर्ट अबाउट द सेल्फ डिफेन्स कैंप ऑर्गेनाइज फॉर द गर्ल्स इन योर कॉलेज क्या थी प्रेजेंटली सबू कॉलेज मान को सेल्फ डिफेन्स प्रोग्राम माने झील मान लगी सेल्फ डिफेन्स प्रोग्राम माने ऑर्गेनाइज होचे कि नहीं यहाँ गोटे करेन्ट एक्टिविटी है से इतार उपरे भी आसबार चांसेस अच्छे आ गोटे सब आ गोटे इम्पोर्टेंट जिनस है सपोज यू आर द सेक्रेटरी ऑफ एन एनजीओ व्हिच वर्क फॉर द COVID-19 पेशेंट इन योर लोकालिटी सबमिट ए रिपोर्ट अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ योर एनजीओ आम गोटे एनजीओ रो सेक्रेटरी अच्छू जेन एनजीओ की काना करुचे COVID-19 पेशेंट लगी कार्य करुचे आम काना करमा गोटे COVID-19 पेशेंट मान लगे जेन काम करुचे से उपरे गोटे रिपोर्ट पब्लिश करबार लगी देमा इटा रिपोर्ट राइटिंग के नहीं करते अनेक गुड़े तो अच्छे किछिटा मुई सिलेक्टिव कहीदेली जेनटा कि बेसिकली आसबार चांसेस अच्छे बुझेगा कि नहीं ये मैंने ये जिनस मैंने आसूची और मुझे कहली सेल्फ सॉरी आमर जेन COVID-19 हेल्थ इश्यूज हेल्थ प्रोब्लेम ई जगह केवल काना बदली जावा खाली सब्जेक्टा टिके टिके चेंज होगा अलग किसी नहीं बुझेगा तुमर केतेटा चैप्टर्स
जेन अच्छे से चैप्टर्स मुझे कितना क्वेश्चंस माने कही दूचे 2-3 मार्क्स नोट कर बेटर हवा तुम मानकर लगी जेनटा कि मुई तो फैकल्टी ऑफ इंग्लिश नहीं से मुईटा तुम फैकल्टी ऑफ इंग्लिश जेन माने काଣା करूछन ऑलरेडी एक्सपीरियंस अच्छन पढ़ाऊन से कलेक्शन कला क्वेश्चंस माने लेखि नब माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज गोटे चैप्टर अच्छे से किसी क्वेश्चंस मुई कहूचे केवल जेन क्वेश्चन के पूरा कम्प्लीटली लिखले भी जानी पारबा एंता मार्क करिनियो आई वाज नॉट टू वरीड अबाउट ऑल दिस व्हाट डज दिस रेफर टू आई वाज नॉट टू वरीड अबाउट ऑल दिस व्हाट डज दिस रेफर टू बुझेला सेकंड क्वेश्चन व्हाट वाज द सरप्राइज दैट awaited the author in Berlin what was the surprise that awaited the author in Berlin next la why did Owens kick the pit next when did the writer and Long realize that they had become friends when did the writer and Long realize that they had become friends why has Luz Long been called a fine example of Coubertin's ideal next on examination post hello which subject did the exam favor which subject did the exam favor it a good question hai hello next how did the boys enjoy their time at the swimming bath how did the boys who were taught Latin and Greek and who learn English सेथिरेगा and who learn English आउ थोड़े कहूँ जे who were taught Latin and Greek and who learn English हैला next I gazed for 2 whole hours at the sad spectacle for the writer एतकी के डबल इन्वर्टेड दियो what the sad spectacle for the writer ई जगह जेन sad spectacle कहा गला सेटा राइटर ले काना थिला next the portrait of a lady how did the grandfather look in his portrait next why could not the grandmother help the writer with his lessons at the city school next how did grandmother pass away
Next, how did sparrows react? How did sparrows react when the author's grandmothers died? When the author's grandmothers died? Hello? Next, daffodils lekhma. Daffodils. What resemblance does the poet find? What resemblance does the poet find between the daffodils and the stars on the Milky Way? And the stars on the Milky Way. Next, what happens to the poet? What happens to the poet when he lies on his couch? What happens to the poet when he lies on his couch? Audela mentions the two moods of poet. Mention the two moods of poet. Hello? Next, a palm of life. A psalm of life. What does the expression muffled drums imply? Muffled drums के single inverted दबो. Hello? Next, what is the poet's observation on art? What is the poet observation on art? What does the poet mean by life is real, life is earnest? Life is real, life is earnest. Hello? Next, the ballad of Father Gilligan. The ballad of Father Gilligan. Who came to the sick man? Who came to the sick man before his death and why? Who came to the sick man before his death and why? Next, why was Peter Gilligan weary? Why was Peter Gilligan weary? Hello? Why did Peter Gilligan seek forgiveness from God? Why did Peter Gilligan seek forgiveness from God? ହେଲା এটা କିଛିଟା क्वेश्चंस जेनटा कि आमे होप करि परमा आशा करि परमा जे एग्जामिनेशन रे आसबा किछिटा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रेस्ट जेनटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आगु भी डिस्कशन करा ही दिला आउ एसे कहि दियाला रिपोर्ट राइटिंग कहि दियाला